हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शंस में हूँ आपका दोस्त हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज अभी जो वीडियो आई है, ट्रेन की वीडियो आई है, ठीक है। फर्स्ट राइड इन इंडियाज नामो भारत। नामो भारत कोई इंडिया में ट्रेन है, ठीक है। और 5 रीजन्स वाई आई प्रेफर ट्रेन इन इंडिया। कैरोलिना गोस्वामी, ठीक है। ये कैरोलिना गोस्वामी कोई व्लॉगर हैं जो मतलब के ट्रैवल कर रही हैं नामो भारत ट्रेन में। तो देखते हैं मतलब इस वीडियो के अंदर इस नामो भारत ट्रेन के बारे में क्या कुछ दिखाया जाएगा, मतलब कि ये ट्रेन कैसी है और ये कहाँ पे चल रही है और कितने टाइम से चल रही है, ये सारा भी इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो इनकी आई थिंक फर्स्ट राइड है, टाइटल भी यही है, फर्स्ट राइड इन इंडियाज नामो भारत ट्रेन, ठीक है। सो इंडियाज इन डिटेल्स चैनल है, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। India's train infrastructure is growing by leaps and bounds. And viewers, I can tell you that my ride in India's Namo Bharat train was one of the best train rides that I have ever had anywhere in the world. And in this video, as I show you what my first ride in this new Namo Bharat was like, I will be sharing several reasons why I love Indian trains. Without an element of doubt, the Namo Bharat train and the new train infrastructure that India is building are absolutely world-class in so many ways. But what makes Indian trains even more outstanding is their affordability. Train rides in Europe can be very expensive, and because of that, many can't even afford them. But it is not just about affordability for passengers. It is also about reducing costs wherever possible. For example, back in 2022, regarding the Vande Bharat Express, this article in Saudi Gazette highlighted this too. As you can read here, every unit is estimated to be 40% cheaper than a similar unit imported from Europe. Another reason is the new improvements that I see every time I'm back in India. In many ways, India is like a rising sun, and Europe seems to be a sinking ship. For example, in Poland and many other countries in Europe, in many areas, we are still stuck in these vintage trams. They can be so dangerous, they cause so many accidents and can be very uncomfortable. In Poland, it took them ages to build a small section of a modern metro rail network. On the other hand, comparatively, we can see how much faster the construction of the metro rail network is in India, and that burning desire to give the best, to improve as fast as possible. I do not see that in Europe as much as I see in India. Just see how pumped up the Indian Prime Minister is here. इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। Another reason is the affordable and wholesome meals that are served in Indian trains. Yes, in India there are options for dishes made with fresh ingredients and of course more vegetarian options. On the other hand, in Europe, expensive and processed food and processed meat dominate in many places. And then India's UPI. It is so fast and convenient. India's digital payment infrastructure and multiple payment options. So far, my experience has been awesome. Another reason is that in many parts of India, communicating in English with locals isn't that difficult. From the ticket seller to the ordinary people. In comparison to the communication issues my husband faced in Europe, to us, India seems so much better. For foreigners who speak English, this can be very convenient. I am not sure if Greta Thunberg has noticed it or not, but many countries in the West are still running their pollution-causing trains. On the other hand, India is going for 100% railway electrification and is already ahead of many advanced nations in the West. Where is the USA? Read this. Where is Germany? Read this. Where is the UK? Friendliness and hospitable behavior, from the police officers and the railway officials to the common public. Nowhere in the world have I experienced friendlier people who would go out of their way to help you. I wish there were more people like that in Europe and the Western world. Now, a suggestion to the Indian railway officials, if they are watching this. How about adding more Indian elements in the new stations that you are developing? So I came across these AI-generated images on X. They look stunning to me. I'm not sure how practical and economical it would be, but it is so nice to see this. What do you think?
Now, it doesn't mean that everything about Indian railways is perfect and they can't learn anything from the West. Yes, India is getting the bullet train, India is introducing faster trains, and already the country is hitting 150 kilometers per hour or more. But let's not forget, the average speed can be improved. And I think the quality of toilets that I saw in the Namo Bharat train stations was not as good as I expected them to be. And then I like their thoughtfulness regarding this dedicated space for stretchers and wheelchairs, but India needs more of this. Big room for improvement when it comes अरे to यार civic कमाल infrastructure. का वीडियो था भाई। इस लड़की ने तो इंडिया की इतनी तारीफ की है नामो भारत ट्रेन की, स्पेशली क्योंकि उनकी फर्स्ट राइड थी नामो भारत ट्रेन में, ठीक है। और उन्होंने बताया है कि भाई ये जो ट्रेन है नामो भारत ट्रेन है, ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, ठीक है। पूरी दुनिया में जिस तरह बाकी कंट्रीज में वो यूरोप का बता रही हैं कि यूरोप में जिस तरह से ट्रेन चलती हैं, ये उस तरह की, उस लेवल की भाई यहाँ इंडिया में ट्रेन चल रही है और काफ़ी लग्जरियस ट्रेन है, ठीक है। और ट्रेन में जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने बताया है, पीएम मोदी जी बता रहे थे कि इंडिया जो है रेलवे ट्रेन्स में दुनिया में भाई एक टाइम आएगा कि फर्स्ट पे होगा, पहले नंबर पे भारत होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रेन चलेंगी वो दुनिया में टॉप क्लास की ट्रेन्स जो हैं वो इंडिया में, भारत में फ्यूचर में भैया चलने वाली हैं, ठीक है। तो भाई ये जो है ये व्लॉगर है, इन्होंने सफ़र किया है नामो भारत ट्रेन में, ठीक है। बाकी चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं और बहुत सारा मतलब कि ये जो ट्रेन है इसका ये बताया है कि यूरोप जो है वो मतलब सिंकिंग शिप, ठीक है, एक शिप की तरह डूब रहा है, और जो इंडिया है वो राइजिंग सन है, ठीक है, एक सूरज की तरह उभर रहा है। तो भाई बहुत सारी बातें इन्होंने बोली हैं, इंडिया की बहुत सारी तारीफ की है कि इंडिया जो है बहुत बढ़िया कंट्री है, ट्रेन्स बाकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेशंस हैं, हर तरह के यहाँ पे वर्ल्ड क्लास चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा, काफ़ी मज़ा आया इस वीडियो को देख के, ठीक है। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। इससे रिलेटेड कोई और वीडियो है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।